that's why we used to push each other. So we did well. एक साल में अच्छी खासी like we did a lot of competitive programming. We used to like bunk classes to do CP. We used to skip classes, skip college day classes to do CP and all. But हाँ like अच्छा मतलब अच्छा खासा foundation build हो गया था. And उसके बाद we went for ICPC. We got selected into made into the online contest जो first था pre elimination या pre qualification round था. And we went into regionals to represent our college. तो वहाँ पे हमने एक्चुअल में देखा कि लाइक व्हाट द लेवल इज एक्चुअली. सो हमारे साथ हमारे बगल में एक टीम थी, मोशिजुकी नाम था. दे वर फ्रॉम ट्रिपल आईटी बैंगलोर एंड दैट ईयर दे वेंट इन वर्ल्ड फाइनल. सो रीजनल से 2 to 3 टीम्स फ्रॉम इंडिया गोस टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड फाइनल्स वेयर. सो उस टाइम पे वर्ल्ड फाइनल्स वाज हैपनिंग इन चाइना. बट यहाँ पे मुझे काफी कूल लगा. इट लुक्ड लाइक फर्स्ट ग्लिम्स में मेरा लाइक एयरटेल, कैपजेमिनी, टीसीएस वगैरह से इट वाज लाइक वे डिफरेंट. द कल्चर वॉज वेरी डिफरेंट. एंड वहाँ पे मैंने मेरा इंटरव्यू वहाँ के सीटीओ ने लिया फर्स्ट राउंड. शिखर गोयल, ही इज करंटली द सीटीओ देयर. एंड देन एक एचआर राउंड हुआ एंड लाइक 1 or 2 टेक्निकल राउंड्स हुए एंड आई मेड इट. लाइक वो एक दिन में इंटरव्यू हो गया एंड आई मेड इट. सो after 3 to 4 days I got a reply back from HR ki hey like we have shortlisted you and like if you are interested you can join here, this is offer letter वगैरह, you can join us at a software engineering position. and वो सब चीज़ें हुई. तो although I was getting less than Airtel at that time in GFG, but I still like somehow managed to convince my parents ki nahi, I know I am in this field, I'm the like in this field, so I know better ki I should join GFG, not Airtel. Although Airtel is a very big company, Airtel is paying me more than GFG, but still I personally think that for my at current position for my growth, I should like target GFG. Happening around like currently as well ki yaar, why are these companies like stressing so much on DSA rounds? But man, this is what it is. So these companies stress on DSA rounds, like all these big companies, and that's why candidates having good grasp over DSA happens to clear that. So that's the truth, and that's why like I'm saying if you have a good grasp on DSA and if you have a good foundation of DSA and CP, then it gives you a better edge to clear the interviews of these companies. रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द रैंक्स. आज जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो बहुत ही मजेदार रहने वाला है. आज हमारे साथ है मिस्टर सौरभ प्रतीक. सो वेलकम ऑन द पॉडकास्ट सौरभ भाई. Hey, hello guys, thank you for having me. या सो जो मैंने स्टार्टिंग में कोड बोला वो सौरभ की लाइफ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है. वो हम आगे जानेंगे कि कैसे. तो मैं अभी अपना पॉडकास्ट का आज का एजेंडा सेट करने वाला हूँ. तो लाइक आपने कभी सोचा है कि यार क्या अगर क्या कोई इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग की और वो कभी आईआईटी में नहीं गया, टॉप एनआईटी में नहीं गया, उसके बाद भी उसका गूगल जैसी बड़ी कंपनी में, क्योंकि गूगल हर किसी ना किसी की या फिर आई वुड से कि हर किसी इंजीनियर की फर्स्ट चॉइस रहती है, या फिर जो उसकी बकेट लिस्ट होती है ना, विश लिस्ट होती है, उसमें गूगल जरूर होती है. तो कभी हमने हर किसी की लाइफ में भी ये थॉट आता है कि यार मेरा जेईई मेंस नहीं हुआ या फिर मेरा एडवांस नहीं हुआ और मैं प्राइवेट कॉलेज से अपनी बीटेक कर रहा हूँ, तो क्या कभी मैं उस ड्रीम कंपनी तक पहुंच पाऊंगा, क्या मैं खुद को कभी इतना अपलिफ्ट कर पाऊंगा. तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को जानने के लिए और सौरभ की जर्नी को हम और जानेंगे कि कैसे सौरभ ने नॉर्मल कॉलेज से, नॉर्मल टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज से एकेटीयू से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी पहली जॉब की और उसके बाद जब उन्होंने पहला स्विच किया तो वो गूगल में पहुंचे. So welcome on our podcast, Saurav. So good to have you, and it's our honor to have you on our podcast. So we would start without wasting much of our time. We would directly start by your quick introduction about your it would be great if you could tell our audience about your academic background and about your current profile as well. Okay. So yeah, hey guys, my name is Saurav Prateek. Currently I'm working as a web solutions engineer at Google from past 3 years. So usse pehle like I have done my bachelor's in computer science and engineering. And like after 4 years, I joined a startup, Geeks4geeks, where I worked as a software engineer for approximately 2 years. And after that, I made a like off switch, so through referral into Google. And then since then, I have been working here for 3 years. So total 5 years. I've been in tech. Yeah. सौरभ आपका ना माइक थोड़ा नीचे गिर गया, थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी कम हो गई थी, इसे थोड़ा सा आप ऊपर कर लेंगे. Yeah. Sure. Abhi, is it okay? हाँ, better. Yeah. Achha. Okay.
cool. ठीक है। तो सौरभ, लाइक थैंक यू फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन। अभी हम ना लाइक हम इस आपकी जर्नी को ऐसे सेट करते हैं कि राइट आफ्टर योर स्कूल डेज आपने कैसे डिसाइड किया कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, थोड़ी सी आप अपनी नटशेल में अपनी Yeah. स्कूलिंग के बारे में बता सकते हैं कि यार कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि यार मेरे को पीसीएम करनी है, इंजीनियरिंग डोमेन की साइड जाना है। और फिर बीटेक में आपने ऑब्वियसली जेई मेंस दिया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। और अपनी थोड़ी सी बीटेक के बारे में थोड़ा सा और शेयर किया अपने बीटेक डेज के बारे में। Okay, so I was born and brought up in Bihar actually. So वहाँ पे मैंने schooling करी. I like graduate like schooling मैंने डीएवी से करी थी, डीएवी पब्लिक स्कूल. आई होप सुना होगा ना. हाँ So जी, हाँ जी, हाँ वहाँ जी। से मैंने करी till 12th. और उसके बाद फिर like I like उस टाइम I did not have much interest in computer science. So मुझे उतनी समझ में नहीं आती थी. I used to like stay away from coding and all, क्योंकि 12th में भी थी हमारे informatics practices and all. But उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम. So उस टाइम भी like many like कुछ students थे who were very good in like coding and all, and they used to code. उस टाइम में भी they used to make projects and all in 12th and 11th, but मुझे समझ नहीं आती थी. So I was like कि चलो मतलब मैं उस टाइम भी I was used to like just memorize the for loops and all just to pass in the examination. ज़्यादा था नहीं कोड, उतना आइडिया नहीं था, उतना आदत भी नहीं थी. सो 12th तक तो ठीक था, बट उसके बाद लाइक when जब कॉलेज की बात है, I was interested in science, physics and maths. I used to like a lot. So I thought कि like let's try for JEE. एंड देन फिर मैंने जेई की प्रिपरेशन करी इन 11th एंड 12th में ही करी थी मैंने जेई की प्रिपरेशन. और उसके बाद मैंने जेई का एग्जाम दिया. आई वाज एबल टू क्रैक जेई मेंस. एंड उसके बाद जब एडवांस दिया, आई वाज नॉट एबल टू मेक इनटू एडवांस. So general category भी थी, so it was quite tough for us to like make into the cutoff. But हाँ, like I got a rank of around like 48 to 50,000 in India, and उसके base पे I was getting some colleges, but like कुछ reasons थे, like कुछ personal reasons और कुछ distance के कारण भी, like सब कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मिल रहा था, कुछ साउथ में मिल रहा था बहुत ज़्यादा. So I was not able to join there. So at the end, I like got admitted in this college. It was in under AKTU. Us time it used to call UPTU, Uttar Pradesh Technical University, in Knowledge Park. So it is in Greater Noida basically, and the college is KC Institute of Technology and Management. So now it's a great college currently. Like it's got affiliated under IP University for some of the courses, and it's doing pretty well. And वहाँ से मैंने अपनी बीटेक करी कंप्यूटर साइंस 4 साल. एंड वहाँ पे लाइक इट वाज लाइक जब हमने ज्वाइन किया था, इट वाज द कॉलेज वाज इन देयर वेरी इनिशियल डेज. लाइक इट हैज जस्ट 2 से 3 बैच ही पास आउट हुए थे, एंड वी वर लाइक थर्ड और फोर्थ बैच in computer science. So a lot of infra was not built, a lot of system has not been built already in the college. Coding का उतना culture नहीं था. People like do not have much idea about it. Like ICM, ACM, ICPCA contest होता है, उसके बारे में like no one knew about in my college. Even seniors did not know. There were some like 1 to 2 seniors who used to did coding and all competitive programming, but not much. So first year में आके तो I was like completely clueless for the first semester that what is happening here. I was not able to because उतना coding background था नहीं, and I used to stay away from coding and also first semester basically was really tough for me to get a grasp कि यार हो क्या रहा है. So I remember like teacher like teaching about how there was a program they were trying to like teach basically how to get a maximum value in the array. And I was like just shocked कि okay, this is they are making a loop and then they are swapping the variables. ये कैसे चल रहा है और ये maximum कैसे निकल जा रहा है at the end. So वो logic building थोड़ी weak थी. उसके बाद फिर I used to like फिर मैंने पढ़ा, self study भी करी. We used to make programs and all. तो I was a good student. So basically अगर मैं पढ़ता हूँ तो I was able to do good in subjects. So मैंने पढ़ा नॉर्मली, उतना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ नॉर्मली पढ़ा. गॉट गुड ग्रेड्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एज वेल. बट second year was the time when some of my college folks were doing this code chef, and they told me कि यार like you should also try it. It's good actually. It's help you building your coding skills and logic building. So उस time like the motivation was not to get placements and all, बहुत early था. So we just used to do it for fun. अच्छा लगता है like DSA है और मैथ्स वगैरह भी और पजल सॉल्विंग है, तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा इंटेंस रहता है, गेमिंग टाइप लगता है, गेम थ्योरी टाइप लगता है. यूज्ड टू गेट लाइक एड्रेनलिन रश की ओके सॉल्व किया प्रॉब्लम. और इट बिकेम लाइक धीरे धीरे होते होते वी बिकेम लाइक it became a community kind of thing in our class only. Like we were 5 to 6 people who were solving, who were giving contests together. So एक वो competitive nature हो गया कि
अच्छा उस अगले दिन पता चला अच्छा उसने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है कॉन्टेस्ट में, ओके कैसे किया होगा, चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो ऐसे वी यूज्ड टू पुश ईच अदर, सो वी डिड वेल। एक साल में अच्छी खासी लाइक वी डिड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वी यूज्ड टू लाइक bunk classes to do CP, used to skip classes, skip college day classes to do CP and all. But हाँ like अच्छा मतलब अच्छा खासा फाउंडेशन बिल्ड हो गया था, एंड उसके बाद वी वेंट फॉर ICPC. We got selected into made into the online contest जो first था pre elimination या pre qualification round था, and we went into regionals to represent our college. तो वहाँ पे हमने एक्चुअल में देखा कि लाइक व्हाट द लेवल इज एक्चुअली। सो हमारे साथ हमारे बगल में एक टीम थी, मोशिजुकी नाम था, दे वर फ्रॉम ट्रिपल आईटी बैंगलोर, एंड दैट ईयर दे वेंट इन वर्ल्ड फाइनल। सो रीजनल से 2 to 3 टीम्स फ्रॉम इंडिया गोस टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड फाइनल्स, वेयर सो उस टाइम पे वर्ल्ड फाइनल्स वाज हैपनिंग इन चाइना। So they went to world finals and we actually saw them. They were just sitting behind us. Just हमारे बगल में ही थी वो team, and we saw them how they are actually programming and solving the problem. They solved like 8 to 9 problems in the time span of 5 hours, right? And they made it to the finals, and वहाँ से फिर they went, and उसके बाद like 2 to 3 months बाद we got heard कि okay that one of the teammate from that Moshuki team got hired into Google AI. Like they had a like 1 crore plus package in US. So basically what happened is that like वहाँ पे world finals में these companies they are hiring people there. So they used to pitch the candidates because they knew that if it is ICPC world final, then there will be like best of the best in the world will be there. So they used to be there like Meta, Google, and these good companies were like planning to grab the candidates if they're interested. So yeah, they got the offer, and we got to learn a lot. We did not made into world finals, but yeah, regionals maybe like going into regionals and seeing that India level pe what is happening at in coding and in tech and how good the students are. We used to get a clean idea ki, okay, this is the level. And at that time we were way above the level of our college. Like in our college the students were not that good, but we 3 to 4 students were like really good in CP because we were trying to aim at the like at a national level. We wanted to compete with those who were studying in IIT and triple ITs and all. So वो था goal at the end. And yeah, उसके बाद से फिर आदत हो गई, like we used to do CP a lot. Second year, third year, final year तक we did CP and built a lot of projects and all. Tech में we did and we tried Android, we tried IoT, a lot of things we did. And उससे foundation जो build हुआ that helped a lot actually in placement. So placements may help me a lot. Like about CP actually helped me. A data structures, having a good knowledge of data structures and algorithm helped me a lot in placement. So उसके बाद फिर थर्ड ईयर में TCS आई, एंड आई गॉट एन ऑफर इन थर्ड ईयर फॉर TCS. सो TCS का ऑफर ना जल्दी मिल जाता है. सो जनरली उनका एक कॉन्टेस्ट होता है कोड बीटा, और एक होता है NQT. So code vita में होता है कि you have to give like it's a coding contest, you have to solve problems and then you go into the, अगर आप उसमें अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं and you get a good rank in code vita, then आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली ऑफर आता है. और NQT इज अ बेसिक टेस्ट जो सब जा सकते हैं, वो बेसिकली एप्टीट्यूड वगैरह वाला टेस्ट होता है, उसके थ्रू भी इंटरव्यू कॉल्स आते हैं. तो आई प्रेफर्ड कोड विटा बिकॉज अपन मतलब वी डू यूज टू डू CP a lot. So code vita में I solved around 4 to 5 problems and I got an all over India rank of 180. And that was pretty decent rank because one of my friend who got like a rank of 55,000. So I got an idea ki theek hai, like a lot of people has participated in it, and 118 rank is a decent rank if like 80 to 90,000 people are participating, right? So I got like after 1 week I got the like interview email from TCS ki here you are, like are you like willing to give an interview and all. So I went there, I gave an interview. TCS ka interview is not that difficult. They used to ask basic software engineering questions, subject के questions और logic building थोड़ा सा देखते हैं. And I got an offer, but I did not liked like उतना कुछ like feel नहीं हुआ कि अच्छा ठीक है. I was like ठीक है, I've gotten an offer. My parents were like happy, okay, क्योंकि if you'll see the generation above us are very fond of these companies, TCS, Infosys, but the generation which we are, we know the reality that what is happening in TCS, Infosys, and all these companies. Not all the band, but like if you are at a very lower band and joining at an entry level, then you might not able to like learn much. And at that time many of the students were trying to go for a startup and all, uh, as compared to those companies. So I was like I used to code a lot and I wanted to go into a startup. My dream was ki nahi yaar, I wanted to go into startup and I wanted to learn much and own much
own as much as possible. So that was the idea. And then after, like in final year, I gave interview in a lot of companies just ki yaar, I'd have to get a better package than TCS. Nahi to I have to join TCS. I don't have anything to say. And my parents were like, they were like, "Yari Tata mein ho gaya. Why are you trying to give interviews in their company?" But what do I say? Like, we know the technical depth there कि किस कंपनी में कितना सीखने को मिलेगा. So at that time I thought कि यार maybe there is a better company than TCS for me. I have done a lot and I don't think कि like उसका इंटरव्यू स्ट्रक्चर देख के I thought कि यार ये तो मैं बिना कोडिंग के भी ज्वाइन कर लेता TCS. The level of interview, so I thought कि यार I have worked a lot. I worked hard. I went into ACM, ICPC, regionals वगैरह. So I think that कि like I should join something better where I can like learn much, और थोड़ा इंटरव्यू का भी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई हो एंड एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी हाई हो उनकी. Then I gave a lot of interviews. I gave interviews in Nagaro. I gave interview in Airtel. I got an offer from Nagaro. I got an offer from Airtel actually. I got an offer from Capgemini. There were three companies, and I was like very inclined to join Airtel, but still I was not able to make my mind. And then achanak se at that time I used to post a lot of like some articles under Geeks for Geeks. So they knew ki okay, I was a author. So Geeks for Geeks me you can submit your articles to them. At that point of time you can submit their articles to them, and if your article is good and it's not already present on GFG, they'll be happy to publish it and they'll give you a reward or something, like send you an email out ki okay, you are now a technical contributor or something. So I was very happy my 2 articles got published on GFG. It was a big platform. And then I thought ki like it's a good startup, it's in Noida only, and let's एक बार कोल्ड ईमेल करके देखते हैं. सो उस टाइम जीएफजी का करियर्स का पेज था, तो उस पर एक गूगल फॉर्म था जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ओपनिंग थी. गूगल फॉर्म्स के थ्रू मैंने गूगल फॉर्म ओपन करके रेज्यूमे डाला, डिटेल्स डाली और सेंड कर दिया. बस जस्ट मैं भूल भी गया फिर सेंड करके. फिर हमारे एग्जाम हो गए. हमारे एग्जाम के टाइम था उस टाइम. सो एग्जाम के टाइम आई गॉट like reply back from an HR. We saw that you have like filled the forms for an opening in GFG, and are you interested for an interview? If you are, then like feel free to like come to our office. It's in Noida. ये session. तो मैंने डेट फाइनलाइज करी HR के साथ, and this was the date, and then I went there for an interview. So I went in proper formal shirt वगैरह, and I entered the premises, and I was like, okay, this is so cool. Everyone is like कुछ कोई बीट बैग पर है, कोई मस्त चिल कर रहा है. People are drinking coffee, doing work, jeans, t-shirt में normal. And before that, I have given interviews in Nagaro, Capgemini, and TCS. तो मेरा thinking कुछ और था. It was like कि everyone is in like proper formals, polished shoes and all, and like everyone is like a complete corporate guys doing their work. But यहाँ पे मुझे काफी cool लगा. And it looked like first glimpse में मेरा like Airtel, Capgemini, TCS वगैरह से it was like way different. The culture was way different. And वहाँ पे मैंने मेरा इंटरव्यू वहाँ के CTO ने लिया फर्स्ट राउंड, शिखर गोयल. ही इज करंटली द CTO there. And then एक HR राउंड हुआ, and like 1 or 2 टेक्निकल राउंड्स हुए, and I made it. like वो एक दिन में इंटरव्यू हो गया and I made it. So after 3 to 4 days I got a reply back from HR कि hey, like we have shortlisted you, and like if you are interested you can join here. This is offer letter वगैरह. You can join us at a software engineering position. And वो सब चीजें हुई. तो although I was getting less than Airtel at that time in GFG, but I still like somehow managed to convince my parents कि नहीं, I know I am in this field, and like in this field, so I know better कि I should join GFG, not Airtel. Although Airtel is a very big company, Airtel is paying me more than GFG, but still I personally think that for my at current position for my growth, I should like target GFG. तो मतलब मेरे पेरेंट्स वाज कूल, लाइक ठीक है तुम्हें अच्छा लगता है तो गो फॉर इट. सो आई डिसाइडेड, आई जॉइंड जीएफजी उसके बाद. And like it was a great experience there. Like people were so chill, and I had so much fun, and I learned so much there in 2 years. वहीं पे मैंने मोस्टली डेवलपमेंट सीखी. सो आई वाज नॉट दैट गुड इन द डेवलपमेंट इन कॉलेज. आई वाज गुड इन सीपी बट नॉट दैट गुड इन डेवलपमेंट. वन ऑफ द my colleague like Rahul Goyal, he helped me a lot actually. He taught me a lot of things there कि how to actually do development, कैसे फ्रंट एंड से एजेक्स के थ्रू बैक एंड कॉल्स मारते हैं, आरपीसीज कैसे डेवलप करते हैं. So he taught me a lot, and we together built a lot of things there. There are a lot of people as well who helped me, but हाँ, like total ecosystem अच्छा था वहाँ पे. Like tech stacks भी अच्छे थे. I used to get a lot to learn on AWS and all, databases, development, basic development, back end, front end वगैरह.
क्योंकि स्टार्टअप थी तो यू वर एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग, इट वाज नॉट डेडिकेटेड कि यू विल बी डूइंग बैक एंड या यू विल बी डूइंग फ्रंट एंड, नहीं ना। तो वहाँ पे था कि बैक एंड भी करना है, फ्रंट एंड भी करना है, कभी कभी डेवऑप्स भी देखना हो सकता है। सो वो सब सारी चीज़ें थी। सो दैट आई लाइक आई लर्न अ लॉट एंड विद इन 2 years लाइक उसके बाद आई थॉट कि ठीक है, let's try different companies as well. तो उसके बाद फिर I started giving interviews in other companies as well. So फिर उस टाइम तक like in GFG I was software developer, but apart from that I used to create content and I teach as well. So GFG folks like they came to me and said ki okay, you teach, then why don't you like try to take some sessions on GFG YouTube channel. I was like okay, and at that time GFG has like the YouTube channel was quite good. They have around 100K to 200K subscribers, and like uske through like giving technical teaching at then their platform, and then like I got a lot of views, I got a lot of reach on LinkedIn as well. और LinkedIn की प्रोफाइल भी लाइक ठीक ठाक उस टाइम फिर बढ़ने लगी, एंड पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग, एंड फिर आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग ऑन LinkedIn एज वेल. लाइक आई यूज्ड टू शेयर माय वर्क, आई अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया तो वो शेयर किया, कोई कॉन्टेस्ट दिया, कॉन्टेस्ट में अच्छा किया तो लाइक शेयर कर दिया. सो धीरे धीरे कम्युनिटी बनने लगी लिंक्डइन पर भी, एंड आई गॉट लाइक गूगल के लिए भी आई वन ऑफ द इंजीनियर्स पोस्टेड रेफरल on LinkedIn, and I like somehow stumbled upon that post, and then I commented कि hey I'm interested, and like can I like share my application. So उस पर तो कोई रिप्लाई नहीं है, बट आई थॉट कि यार इसका तो ईमेल है ही, इसने कहा ही है शेयर करने के लिए, तो मैंने ईमेल पे कवर लेटर के साथ अपना रेज्यूमे शेयर कर दिया, एंड उसका रिप्लाई आया कि hey man like your resume looks good, I will be happy to refer you. और after 10 to 15 days I got a reply back from HR गूगल की है लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू द इंटरव्यू विद अस, प्रोसेस विद अस. और उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एंड कोविड भी स्टार्ट हो गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो 2021 की बात है. सो दीज टू सिमिल्टेनियसली हैपेंड, एंड व्हाइल इंटरव्यूइंग फॉर गूगल आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर अदर कंपनीज एज वेल. So I was interviewing for PayPal, GitHub, Amazon, and there were some good startups as well, whom I was like interviewing for. So there was like 6 to 7 companies for which I interviewed in that period of time. And Google का interview जो first round हुआ, first round के बाद I got COVID actually. So I asked recruiter that hey, like I have got COVID and I don't think I'll be able to appear for second round so soon. So can you like reschedule it, maybe push it 10 to 15 days later? So they were happy to do that, and luckily 10 to 15 days I recovered, and then I gave my second round. So उसके बाद like फटाफट like they conducted the rounds very quickly because I already had spent a lot of time after first round of interview. So second, third, fourth, ऐसे हुआ. Fifth round भी like within 10 to 15 days my all the interviews got wrapped up, and after like that, after 10 to 12 days HR communicated me back कि hey like your packet is good and we are like interested to offer you a job there. And then they started, I got an offer from Google, and then yeah, that was the journey from then to like there. तो फिर Google से offer आया, फिर I was like कि ठीक है, Google was my dream company from college days, so I was like really happy, and I joined here, and from there at 2021 July 26 I joined. Yeah, it's been 3 years, I guess more than 3 years. I just crossed 3 years on 26th of July, so 3 years 1 month, and it's going good, going strong. Like वहाँ पे भी, यहाँ पे भी learning curve काफी अच्छा है, getting to learn a lot, getting to handle a lot of projects independently. So yeah, Great, great. that's the So first of all, I would like to, congratulate you on completing your 3 years in Google. So यहाँ पर ना मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहता हूँ कि बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी. सो संदीप जैन सर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है पूरी जेपी कम्युनिटी में. जेपी कॉलेजेस जितने भी हैं अक्रॉस इंडिया, 5 कॉलेजेस हैं. तो मतलब क्योंकि और गीक्स फॉर गीक्स में जेपी के बहुत सारे लोग हैं. वहाँ पर हमारा एक फ्रेंड है अभिनव you'll see yeah, founding जेपी members के are बहुत from लोग हैं. JP only. हाँ, फ्रॉम Yeah, जेपी ओनली. तो वहां का जो कल्चर है ना, मतलब वो बहुत लाइट है और वो एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है. तो लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एड ऑन टू आवर व्यूअर्स कि यार कल्चर बहुत अच्छा है. और गीक्स फॉर गीक्स के मैंने कभी किसी इंजीनियर को कभी बुराई करते हुए नहीं सुना उसकी, कि सबको मतलब हर किसी इंजीनियर ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है गीक्स फॉर गीक्स से. तो दिस इज मतलब, और मतलब आई थिंक कि संदीप जैन सर ने वो रिस्पेक्ट अर्न की है ओवर द इयर्स. या सो yeah. सौरभ, मेरा यहाँ पर ना एक फॉलो अप क्वेश्चन था आपसे कि ठीक है, हमने आपकी बीटेक की जर्नी को समझा पूरी, जो भी आपने अपनी साइड हसल से, जैसे आपने बताया था कॉलेज में इतना माहौल नहीं था, क्लास में इतना माहौल नहीं था, लेकिन आपने कैसे अपना पूरा कोर ग्रुप बनाया और आप कैसे कैसे रीजनल लेवल्स पर, नेशनल लेवल्स पर जाके आपने खुद को अप स्केल किया, अपलिफ्ट किया, और आपने फिगर आउट किया कि हाँ यार, अगर मेरे को कुछ आगे करना है तो मतलब मेरे को साइड बाय साइड
इस कॉलेज के माहौल से अलग निकल के मेरे को खुद को डेवलप करना पड़ेगा, मैं तभी ज्यादा आगे लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा। सो नाउ ठीक है, आपने ये भी बताया। मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि गीक्स फॉर गीक्स में भी आपने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया, तो एट विच पॉइंट यू रियलाइज कि यार अब सही टाइम है मेरा स्विच करने का, और क्या फैक्टर्स थे, क्या पैरामीटर्स आपने कंसीडर करे फॉर मेकिंग एन स्विच? ओके, सो हाँ, लाइक जीएफजी में आई स्पेंड 2 years एंड उसके बाद आई फेल्ट कि लाइक काम रिपीटेटिव हो रहा है। लाइक आई यूज्ड टू गेट टास्क बट आई लाइक ऑलमोस्ट न्यू कि हाउ टू डू इट, and that was happening till like from 3 to 4 months. So I was thinking to ask for a project change as well, but apart from that I also thought ki like we can do that, we can do a project and change as well, but let's see like what other companies are offering and how much mera market value hai kya actually, like maybe I can earn more, right? Maybe I can learn more. So दोनों चीजें थी, learning curve and money factor भी था. So I decided to give interviews for other companies as well. And I saw like some of my we used to like have interns at that point of time in GFG. So हमारे interns भी अच्छी अच्छी companies में गए. Like one went to Google, one into ShareChat, one went to Amazon, and then Tower Research, right? So I saw like people are going into like these big companies, earning well and learning as well. So I thought ki like let's target now big firms and I'll try to give the interviews and let's see what happens. That's why I started like interviewing for these companies. So all of these companies, like I appeared for GitHub, PayPal, Amazon, Google. So all of these, like these are big names actually. So I wanted to see like if I'm capable enough to crack the interview process or not. And then we will see like how it goes. Luckily, like Google happened. Like I was able to crack the interviews. Like there were 3 to 4 data structure problem solving rounds, one Googliness leadership round, and then there was one more round. So I was able to crack it. And then after that, like the offer they gave was really, really lucrative and the role was really good. And like whatever I wanted in the role, it was looking solid to me. And Google ka, like I wanted to work at Google as well. So why to let this opportunity go? So at that time I thought ki theek hai. Like, even though maybe GFG में भी रह के I can get to learn more, but I don't want to leave this opportunity actually. I want to see कि यार if I go into Google what happens from there. I know कि मतलब रहती है कुछ कुछ चीजें कि थोड़ा मतलब if you are moving from your comfort zone into a new company थोड़ा डर रहता है कि यार what will happen and how things will go, whether I'll be able to ace in my role or not. But I thought कि चल we'll see what happens. But I really want to work in this company and I want to see that how the ecosystem is inside Google, like how people बाहर से तो बहुत सुना है कि Googler हैं and in software engineers or like people within Google are really smart. Like I want to work with them and to see कि अच्छा ठीक है, let's see how are they perceive things, how they solve problems and all. So yeah, that's why when I got offer, I decided to join immediately. So sort of moving on to our another question, like ये मैं दो क्वेश्चंस को कपल कर रहा हूँ, तो like what is your say on this, your take on this, like how to get into Google as a fresher and as a senior? तो ये आप अपने दो Okay. पार्ट्स में अपना आंसर को बाइफरकेट करके बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। Yeah. So mostly what I have seen, Google में like Google क्या like any FANG companies, there is a lot of data structure problem solving rounds काफी ज़्यादा होते हैं. So I've seen a lot of like new fresh graduates making into Google who are really good in CP, competitive programming, and who have a very good foundation of data structures and algorithms. So that is a very like I also made it into Google because like, I had a very good grasp over data structures and algorithms. I used to do CP and all, and that played a very crucial role in me clearing those interviews. So if you're a new graduate, then if you have a very strong foundation in data structures and algorithms, then it will give you a very big plus point to clear the interviews of these companies. And there's a lot of debate happening around like currently as well. Ki yaar, why are these companies like stressing so much on DSA rounds? But man, this is what it is. So these companies stress on DSA rounds, like all these big companies, and that's why candidates having good grasp over DSA happens to clear that. So that's the truth, and that's why like I'm saying ki, if you have a good grasp on DSA and if you have a good foundation of DSA and CP, then it gives you a better edge to clear the interviews of these companies. Yeah. ओके, सो सौरभ, आप हमारे व्यूअर्स को लाइक जब आप जो आपने लिंक्डइन पोस्ट के बारे में बताया कि आपने उनको ईमेल भेजा कवर लेटर के साथ और फिर वहां से
गूगल के एक एम्प्लॉय ने आपको रेफर किया, देन यू गॉट अ कॉल एंड ऑल। सो आप हमारे ये मेरे मतलब दो क्वेश्चंस, अगेन दो क्वेश्चंस मैंने क्लब किए हैं कि जब आपके पास एचआर स्क्रीनिंग राउंड हो गया एंड टिल द टाइम यू गॉट द ऑफर, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने कैसे चीजों को स्ट्रेटेजाइज किया कि यार मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, कैसे मतलब रिवाइज किया? ऑब्वियसली यू आर अवेयर कि क्या क्या आता है, लेकिन जो मेंटल एक्सरसाइज करना, रिवीजन करना, वो क्या आपने स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की? उसके बाद कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या राउंड्स में पूछा गया था, वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि क्या क्या आता है गूगल के इंटरव्यूज में। Okay. So when I got a call from the HR, I still remember the date. It was actually 15th of May. जब I got a call from the HR saying कि hey, are you interested for this role or not? And I remember me and Rahul were just finishing up a podcast for GFG at that point of time. We decided हमारा कुछ माइक का इशू हो गया था ऑफिस में, तो मैंने राहुल को कहा कि यार चल मेरे घर चलते हैं, मेरा घर पास ही है. So he used to live in Delhi, मेरा घर नोएडा में था उस टाइम. So we were in the office. I told him कि यार एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, let's record from my house. वहाँ पे माइक की भी इशू रिजॉल्व हो जाएगी, नेट कनेक्टिविटी भी है और माइक वगैरह भी है, तो कोई टेंशन नहीं है, अपन रूम में कर देंगे. तो वी वेंट टू अ हाउस एंड हमने पॉडकास्ट रैप किया और उसके बाद ही जैसे ही कॉल है एंड आई वेंट इनटू बालकनी टू सी, अननोन नंबर था. फिर मैंने कॉल पे बात करी, फिर आई केम इनटू थ्रू लाइक मैंने सबसे पहले राहुल को बताया कि भाई ये तो गूगल के एचआर का कॉल आया है और ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं. तो राहुल वाज लाइक कि हाँ इंटरव्यू देंगे, दे भाई और देख क्या होता है फिर आगे, विल सी. तो वो सब सीन था. उसके बाद आई डिसाइडेड, तो वो क्या होता है ना गूगल में, व्हेन यू लाइक गेट अ नच फ्रॉम एन एचआर, दे आल्सो सेंड यू अ ईमेल फ्रॉम गूगल वेयर दे गिव यू अ पीडीएफ और डॉक्यूमेंट सेइंग कि what are the expectations, like how you should prepare and what are the expectations for the role which you are applying or getting interviewed for, right? So उन्होंने एक वो डॉग भेजा. मेरी वेब सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग की रोल है, so उसके लिए उन्होंने डॉग भेजा कि what are the expectations. So they were clearly written कि we need a person with good data structure algorithms, strong problem solving skills. Apart from that, they wanted a person with good computers fundamentals as well, so databases, operating system, computer networks की भी अच्छी knowledge होनी चाहिए. So I thought कि यार डीएसए तो अपनी अच्छी है, बट आई डोंट वांट टू मिस अप दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज कि मैंने रिवीजन नहीं किया है डेटाबेसेस, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स का, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक 2 years आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज एंड थोड़ी चीज़ें मिस आउट थी. तो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया वापस से डेटाबेसेस ऑपरेटर. आई मेड 3 बुक्स, 3 नोटबुक्स मैंने खरीदी. एक पे डेटाबेस लिखा, एक पे कंप्यूटर नेटवर्क्स लिखा, एक पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा. एंड उस टाइम गेट स्मैशर्स का चैनल हुआ करता था, अभी भी है एक्चुअली. सो व्हाट दे डू इज कि दे यूज्ड टू प्रिपेयर यू फॉर गेट. सो गेट का सिलेबस बहुत ही मतलब वो है सीएस का, डेटाबेस, कंप्यूटर साइंस, ओएस का उनका 3 प्लेलिस्ट थी जो गेट के लिए पढ़ाते थे. बट वो आप पढ़ लोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड हाईलाइट की क्या क्या है, सारी चीजें आप जल्दी मतलब आपके दिमाग में चली जाएंगी. ओके, एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका. So I used to spend 2 to 3 hours daily for 15 to 20 days in computer science, in computer networks, OS and database from that channel only. So उसके हर पे शायद 20-25 एपिसोड्स वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ से रिवीजन करा मैंने कंप्यूटर कोर का. और उसके साथ साथ आई यूज्ड टू लाइक डू डीएसए नॉर्मल अपना कोड फोर्सेस, कोड शेफ कर रहे हैं. उस टाइम मैंने लीड कोड उतनी नहीं करी बिकॉज आई वाज नॉट अ लीड कोड पर्सन. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग ऑन कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस. सो मेरा पर्सनल कोड शेफ है, लाइक आई यूज्ड टू program on CodeChef on a lot because CodeChef used to promote ICPC and all these things. So हम मतलब we initial days से ही हम CodeChef पे काफी प्रोग्रामिंग करते हैं and I personally like that platform really well. अब तो उस टाइम इट वाज एक्वायर्ड बाय डायरेक्टली, अब तो अन अकेडमी ने उन्हें एक्वायर किया है CodeChef को. बट हाँ लाइक अभी भी इट हैज अ गुड, अब तो बहुत सारी चीजें पेड हो गई है बट एट दैट टाइम ऑफ टाइम इट वाज कंप्लीटली फ्री. बट अभी पेड है, उन्होंने कुछ सारे पेड ट्रैक्स भी निकाले हैं बहुत सारे. बट अभी भी आई सी दैट प्रॉब्लम लिस्ट और कॉन्टेस्ट ठीक है वहाँ के. सो उस टाइम भी कोडशेफ से करता था मैं. सो डीएसए में तो कोई दिक्कत नहीं हुई. डीएसए तो आई यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम कोडशेफ और मेन तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो वो प्रिपेयर किया. 15 to 20 डेज में रिविजन करा वही 3 नोटबुक से. और हर इंटरव्यू से पहले वो नोटबुक मैं एक बार देखता था दिन में. बस मतलब पूरी नोटबुक भर गई थी. ये क्योंकि मुझे आदत है, मैं मतलब सिर्फ वीडियो देख के नहीं पढ़ सकता. अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे लिखना है. इफ आई डोंट राइट मेरे दिमाग में नहीं आएगा. आई विल एक मैं भूल जाऊंगा एंड आई विल गोना मेस अप. सो मैं नोट्स बना के रखे थे मैंने दोबारा 3 कॉपी. और वो 3 कॉपी में एक बार इंटरव्यू से पहले, टेक्निकल इंटरव्यू से पहले एक बार पलट लिया तीनों. 1-2 घंटे में हो जाता था एंड देन आई यूज्ड टू लाइक गेट इनटू द इंटरव्यू जोन. ठीक है, व्हाट हैव टू डू. सो लकली लाइक दैट हेल्प्ड अ लॉट. सो डीएसए राउंड्स तो लकली सही चले गए. एक सिस्टम डिजाइन का भी राउंड था बड़ा,
बेसिक सा राउंड था, बिकॉज मेरे पास 2 years का एक्सपीरियंस था, तो डिड नॉट वेंट into very advanced system design round. So थोड़ा basic round था, but DSA rounds were really really well. So the questions were really good. Like, questions were around like maths, coordinate geometry, binary search trees and tries and all, graphs. इस पे इन सब चीज़ों पे questions थे. So they really targeted the advanced data structures. And I wrote, actually I wrote my Google interview experience on a Medium article, stating the same things which I am sharing. So वो हमारी मतलब आफ्टर आई जॉइन गूगल, मेरी गूगल एचआर को पता चला कि रिटर्न दिस मीडियम पे आर्टिकल वेयर दिस इंटरव्यू पर, तो दे मेल्ड मी कि यार तुमने लिखा है, एक काम क्यों नहीं करते हो, लाइक तुम्हें कोई दिक्कत हुई अगर हम इसको अपने हायरिंग पैकेट में डाल दें वेब सॉल्यूशंस इंजीनियर के लिए। सो वेब सॉल्यूशंस इंजीनियर इंटरव्यू के लिए कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको जो पैकेट मिलता है जिसमें सारी चीज़ें होंगी, क्या क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ विल ऐड दिस कि दिस इज लाइक interview experience of a web solutions engineering candidate who is currently working as a WSC at Google. You should go it. So उन्होंने डाल दिया। I was like, yeah, very very happy, क्यों नहीं आप please go ahead with that, use it, it's open source, so जो करना है like you can add it, no worries. तो उससे मुझे LinkedIn पे आने लगे बहुत सारे। So जिनका WSC के लिए इंटरव्यू होता है, they used to ping because वो मेरा इंटरव्यू पढ़ते थे, वहां से मीडियम्स के LinkedIn का लिंक, वो मेरा प्रोफाइल लिंक था। तो they used to come to LinkedIn and they used to message me कि यार आप मतलब मेरा WSC का इंटरव्यू है and I like got your Medium article and ऑल थिंग्स। सो वो सारी चीज़ें मतलब इंटरव्यू का था, लाइक आई 4 राउंड्स डीएसए, एक सिस्टम डिज़ाइन का बेसिक सा राउंड एंड देन देयर वाज़ अ बेसिक मैनेजरियल राउंड। सो वो हायरिंग मैनेजर ने लिया था एंड देन आई गॉट इनटू गूगल बेसिकली। सौरभ, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या रोड मैप शेयर करना चाहेंगे कि अगर उनको टॉप मैंग कंपनीज अगर टारगेट करनी है तो वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कितने ड्यूरेशन में वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं मैंग कंपनीज के लिए? So if someone is in final year, I will like assume that they have gone through like पहले 3 साल they have done like btech में कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं कि like फाइनल ईयर में आया and they started कि चलो अब पढ़ना शुरू करते, ये नहीं। तो I will assume कि they have good grasp of foundational subjects, DSA, data structures, right? Computer operating systems, computer networks, databases and all. So क्योंकि ये सब सारी चीजें थर्ड ईयर तक में रैप अप हो जाती हैं। So उसके बाद if you want to like make into these companies, you should like, keep revising those concepts. And apart from that, आप DSA करो, like do DSA well, and open source भी थोड़ी ये thing करनी चाहिए, because उससे you get to know that कि actual में software development होती कैसे, because actual software development is really really different from those code which we write to solve a DSA problem. That I get to know when I started in tech. There are a lot of systems here, a lot of things which you have to take care of, like writing clean codes, right? How you resolve merge conflict, versioning क्या होती है, right? Pair programming कैसे करनी है, deployment का क्या status है, health checks कैसे होते हैं, exception handling कैसे करते हैं. Lot of things are there which you might not, which you'll definitely not learn when you are doing CP, but these are like good software engineering practices. And अब तो like उस टाइम मेरे टाइम पे तो like बहुत सारी companies they don't used to care much about it, और DSA का बहुत ज़्यादा boom था, but now I am seeing कि like companies are caring for these kind of things as well, और वो additional rounds introduce कर रही हैं। So Flipkart में भी I've heard कि एक machine coding round introduce हुआ है, and lot of companies are changing. So I prefer कि even though like these are not a part of interviews, but DSA और course subjects के साथ you should have a gist कि open source में क्या चल रहा है, like try to go through some open source repositories, try to go through their code, try to understand that how they are like releasing a feature, coding a feature, कैसे maintain कर रहे हैं वो अपना open source, right? So वो सारी चीज़ें भी I think it is really really important। और अब तो like आप देख रहे हो कि टेक में क्या हो रहा है, like it's changing drastically since these LLMs and things are here, agents वगैरह। So I think कि people should start studying that as well, because you have to learn to live with them। You maybe मतलब आप कुछ भी कह लो कि AI वगैरह is not that smart या will not replace, but these things, these LLM, these agents, these generative AI models are here to stay and they can help you in immense ways। I have seen it, like बहुत कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, and you might that if you like use them in your daily work job or like daily repetitive things, then आपकी productivity बहुत बढ़ सकती है। So you need to like learn them, understand them। अभी जो LangChain आया है, LLMs हैं, RAG है, RAG, राइट? इन सबको लाइक कैसे यूज करते हैं, कैसे इससे एजेंट्स बिल्ड करते हैं, राइट? कैसे एक फ्रेमवर्क बनाते हो, कैसे LangChain के ग्राफ्स बनाते हो, एजेस नोट्स कैसे
ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो अब तो मैं बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ, बट लाइक एट अ हाई लेवल आई विल से कि यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ these and you should like have a idea कि what these models are capable of और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। अगर पता ही नहीं रहेगा कि आप किस चीज से डील कर रहे हो तो फिर like you won't be able to like understand कि चल क्या रहा है। So you should understand कि ये मॉडल्स क्या कैपेबिलिटी क्या है इनकी और आप इनको कैसे यूज कर सकते हो अपने साथ अपने डेली इन्वायरमेंट, राइट। अब तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो लाइक दे आर स्ट्रेसिंग कि हम कोडिंग आप कर लो, टेस्ट केसेस हम इनसे जनरेट करेंगे, राइट। स्विगी ने रिसेंटली अपने सीक्वल जो क्वेरीज हैं वो एलएलएम के थ्रू जनरेट करना स्टार्ट किया है। सो लॉट ऑफ कंपनीज आर मूविंग लाइक trying to offload a lot of technical work to these LLM agents and all, right? So वो चीजें हैं and these are here to stay. These will improve in future. जैसे जैसे हमारी computation power बढ़ेगी, जैसे जैसे time बढ़ेगा, these models will gonna improve and they will gonna do a lot more better things. So we should like catch up with them, I'll say. So पहले के मतलब 2-3 years पहले अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, I'd have said कि यार DSA करो, डेवलपमेंट करो, हो गया। बट अब का आंसर बहुत डिफरेंट है, लाइक DSA CP वगैरह के साथ साथ you should have a better idea of all these things. AI and AI tools. So yeah, right. So Yeah. like go ahead. No, yeah, please go ahead. Yeah. So basically, like sort of my next question is like आपने हम DSA पे बहुत फोकस करते हैं, right? तो हम डे टू डे लाइफ में DSA का क्या यूज करते हैं? क्या गूगल में डे टू डे लाइफ में आप DSA का यूज करते हो? डे टू डे लाइफ में तो आई विल नॉट से कि मैं लाइक आई डू इट एवरी डे, बट हाँ लाइक कभी कभी जब आप कॉम्प्लेक्स फीचर्स से डील कर रहे हो, जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्ड करनी है, वहाँ पे योर प्रैक्टिस इन DSA एंड CP हेल्प्स यू अ लॉट। क्योंकि उस टाइम फिर आप यहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं होगे कि यार कॉम्प्लेक्स लॉजिक को लिख देना एंड उसके बाद 4 to 5 days के बाद अपने ही कोड के पास आना, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को समझना, दैट्स अ वेरी अंडररेटेड स्किल। मतलब 10 दिन बाद आप ही आओगे अपने कॉम्प्लेक्स कोड पे देखोगे तो यूल से कि ओके क्या लिखा है मैंने। सो वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, राइट। और वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक कैसे सोच सकते हैं, एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद दैट लॉजिक और नॉट, दैट इज रियली रियली एक डिसेंट थिंग। और वो DSA से आती है। लाइक आई हैव पर्सनली लाइक देयर आर 1 to 2 प्रोजेक्ट्स वेयर आई हैव यूज्ड DSA. I have used trees, recursion, and backtracking to solve one of the features in Google, right? So I'm very proud of it. Like I have this knowledge, so I'm able to implement it, and that really goes very well. If you are able to implement it, then your solutions काफी अच्छे काम करते हैं. You'll see in very few lines of code you can achieve a lot and lots of things. So हाँ, like daily तो नहीं होता. Daily मतलब हर रोज ऐसा नहीं है कि you will get to encounter these complex features, but हाँ कभी कभी होते हैं तो use कर सकते. Like there are a lot of, in my case there are like 1 to 2 cases where I have used DSA. So like sort of like what is your favorite language? Programming language. Favorite language? Programming language, I used to do coding in Java a lot. So 3-4-5 साल से तो मैंने जावा ही करी कोडिंग। फिर मैंने मशीन लर्निंग सीखा, सो वहाँ पे आई यूज्ड टू डू इन पाइथन। अभी कोटलिन भी कर रहा हूँ थोड़ी, बट आई रियली प्रेफर जावा अलॉट बिकॉज वो मतलब आई अंडरस्टैंड कि अब तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे जा रहे हैं बहुत लोग। आई हैव लाइक ट्राइड जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एज वेल, वो भी सही है, बट सिंस आई हैव प्रोग्राम्ड अ लॉट इन जावा एंड आई हैव done a lot, like implemented a lot of things in Java, so I personally like Java a lot. But maybe अगर इन सब लैंग्वेजेस में भी drill down या in depth में जाऊंगा तो I like it. Yeah. And according to you, like what is the most difficult language? Most difficult language? Apart from Yeah, assembly difficult. language. So, C++ and like C मुझे difficult लगती है, but the thing is कि the lower the language is, like the higher the capability you have. So C में C is a difficult language. C difficult है because C पे आप बहुत memory level पे बात करते हो. You have the capability to allocate a memory. How much memory you are allocating, how much memory you are freeing, सब आपके हाथ में. It's a very low level language. So I prefer कि like for me C was tough, but I think if you like learn really well, you can build a lot of optimized products and features if you're using those languages. And I have seen like in Google as well, a lot of programming, a lot of coding happens in C++. So that is a tough language for me, but I really respect those languages that provide so much capability. like they are a base for everything. That's true. Yeah. C is a base for a lot of other languages as well. I have heard C is a base. A lot of machine learning models have been implemented from scratch in C++ and C languages.
या तो सौरभ आपका मतलब आपकी गूगल में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब व्हाट इज योर लाइफ एट गूगल? So basically, we have like my role is very similar to a software engineering role. The only difference is कि we build products and services for Google Ads and business teams, sales team, internal जो team है उनके लिए we build products and services. So मेरा domain Google Ads का है. So हमारे जितने products है वो Google Ads से related ही होते हैं. So we have a lot of interactions with the Google Ads team, right? उनकी जो लो लेवल APIs हैं और Google पे जो ads में जो basic campaigns, ad groups वगैरह का concept है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी complex है, काफ़ी vast है. सो उनसे हमारा टेक्निकल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ माय डोमेन. सो वी बेसिकली बिल्ड प्रोडक्ट्स. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट अ लॉट ऑफ कोड. सो मोस्टली मेरा दिन लाइक इन गूगल, अब तो आई हैव बीन लाइक आई एम एन L4 here. So it's like I'm leading one product, and अभी like when I was L3 mostly coding में, but since it's a senior role, so now my 30 to 40% of the time 30% of the time goes in meetings, right? And उसके बाद 20% of time, 20 to 25% of my day time goes in actually coding, and 10 to 15% goes into code reviews and rest of the things. So अगर कुछ documentation हुआ, documentation update करना हुआ, design docs update करना हुआ, PRD review करना हुआ, colleagues ने CLs basically PR कहते हैं, like in the pull request we say outside, in Google we say CLs, change lists. So yeah, PR review हुआ, ये सब चीज़ें में भी काफ़ी टाइम जाता है. And coding is like 20% or 25% of my day time goes into coding. अगर कोई बहुत बड़ा critical feature है, I have to spend like that needs to be delivered very quickly, then maybe I have to spend 50 to 75% of my time. But हाँ, like ऐसे 30-40%, 25% of the time mostly. सो यही है. बाकी गुड़गांव ऑफिस है मेरा. सो वहाँ का इंफ्रा काफ़ी अच्छा है. लाइक फ्रॉम अमंग ऑल द इंडियन ऑफिसेज इन गूगल, द गुड़गांव ऑफिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल. फूड इज रियली गुड. सो आई वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली. आई डोंट लाइक टू वर्क फ्रॉम होम. सो मैं 4 to 5 days ऑफिस ही में रहता हूँ. एंड वी एंजॉय ऑफिस अलॉट. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. एक सो वो भी है, पर्क्स भी हैं इसके. बट हाँ, प्रोडक्टिव रहता है ऑफिस से काम करना. सो या दैट इज द बेसिक. या कूल सौरभ. सो सौरभ, जैसे यूट्यूब भी गूगल का है, राइट? तो आप यूट्यूब की एल्गो शेयर कर सकते हैं, कैसे अपना कंटेंट वायरल कर सकते हैं? मेरा नहीं हो रहा है यार. यार वो लाइक ऐसा कोई इसका वो नहीं है. क्या कहूँ मैं, मतलब ऐसा कोई वो की नहीं है कि विद गूगल आई नो एंड आई कैन गेट माय चैनल वायरल. मेरा भी चैनल है, नहीं हो रहा है यार वायरल का. बट हाँ, वो गुड कंटेंट पर ही है. सो आई हैव लाइक व्हाट आई हैव हर्ड इज कि लाइक हाउ फ्रीक्वेंटली you are posting on YouTube, and how much interaction it is getting up like from the other folks. That is a big thing which helps the YouTube algorithm to promote your channel. अगर आप चैनल पे एक्टिव नहीं हो तो it will not give much boost. But अगर आप एक्टिव हो, you are posting 1 to 2 videos on a weekly basis, then YouTube algorithm understands कि okay, this is an active channel and yeah, this needs to be promoted. But हाँ, अभी आप देख रहे हो बहुत सारे YouTube channel है, so we have to do something different to get our channel. रोनाल्डो से मिलना पड़ेगा. आपने देखा ना भी, रोनाल्डो एक ही दिन में भाई उस बंदे ने सारे रिकॉर्ड भाई 22-23 मिलियन. मैंने वो स्पीड का लाइव स्ट्रीम देखा जिसमें वो देख रहा है उसको सरपास करते हुए. हाँ. जैसे उसने सरपास किया, वो अपने ही सिस्टम पे कूद गया. हर कुछ ही चला हुआ है, Crazy. 2-3 दिन से ना हर कुछ ही चला हुआ है. हाँ, that is true. हाँ, That is true. Yeah. So, Saurav, that was all about this podcast. So, on a lighter note, like we have recently started this segment in our podcast, like short rapid fire round questions. So, I'll be asking. So you have to, you have to be really quick in your answer. So, 1 या 2 वर्ड के आंसर होंगे, ठीक है. सो फन एलिमेंट है ये. 1 से 2 मिनट का ये रहने वाला है सेगमेंट, ठीक है. सो आई शुड स्टार्ट. सो जब आपके पास गूगल का ऑफर लेटर आया, तो जो आपने सबसे पहले किसे बताया अपने घर में? Sister. ओके. पहला एक्सप्रेशन क्या था, मतलब क्या वो इमोशंस थे, क्या वो जज्बात थे जब आपने ऑफर लेटर देखा एचआर की साइड से आते हुए? I was happy. Like it was unbelievable. ओके. अच्छा. योर फेवरेट फेवरेट क्यूजीन? South Indian. ओके. फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? London. Okay. Top 3 skills that you would suggest to the
person who is pursuing his btech from a private university or tier 3 university, let's say IIT NIT का टैग नहीं है, तो वो कैसे ड्रीम कंपनी जैसे गूगल अमेजोन को कैसे टारगेट कर सकता है? टॉप 3 स्किल्स. I will prefer data structures algorithms, good grasp of infrastructure designing softwares, and third will be maths. So maths plays a crucial role. Okay. And top 3 places in your bucket list where you would like to travel one day in your life. Acha, 3 places. So I am planning to travel to London pretty soon, maybe 1 to 2 months. So that luckily that will be crossed from my bucket list. Apart from that, Switzerland and Paris. Okay, great. Favorite sports personality? Virat Kohli. Great. Where do you invest your money? I invest a lot of my money on technical gadgets, and Okay. apart from that, like financial investment में नहीं जाऊंगा, but हाँ, like for me, I spend a lot of money in gadgets a lot. Like सबसे expensive MacBooks, gadget, phones. सबसे expensive gadget कौन सा है अभी आपके पास? मेरा फोन ही है. I really did not wanted to buy that costly, but हाँ फोन ही है like 1.5 lakhs. So I invest. मेरा MacBook भी इतना महंगा नहीं है जितना फोन है. So I sometimes I get a like regret seeing the phone कि मैंने क्यों लिया इतना महंगा. It would be like 70,000-80,000 में भी आ जाता. But हाँ. Yeah, are you just one laptop guy or full setup guy? Full setup guy. अभी भी like one screen is opened up here and another screen is here and the laptop is here. So that was It's crazy. that was it from our side. Saurav, so good to have you on our podcast. So much to learn from your journey. And I believe हमारे जितने भी viewers ये podcast देखेंगे उन्हें आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग कि यार हम प्राइवेट कॉलेज से भी होकर भी हम कैसे अगर हमारा विजन क्लियर है, एम क्लियर है कि हाँ यार मेरे को कुछ अलग करना है, और राइट फ्रॉम द जैसे आपने बताया कि मेरे को सबसे अच्छी बात आपकी जो लगी कि यार जो यंगस्टर्स है ना वो स्टार्टिंग के 3 बीटेक में मजे भी लेने चाहिए. ऐसा नहीं कि मजे मत लो, चिल मत करो, लेकिन ऐसा नहीं मजे कि बहुत किए हमने भी. I won't say कि नहीं किया है, बहुत मजे किए कॉलेज में, बट हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यार 3 साल कुछ भी मत करो और 4th ईयर में आप आओगे और सीधा भाई 30-40 लाख का पैकेज फोड़ लोगे, वो इम्पॉसिबल है. ठीक है, मजे करो 3 साल 4 साल, लेकिन हाँ साइड बाय साइड कुछ ना कुछ अपनी एक स्किल पर ऐसे काम करते रहो, खुद को अपडेट रखो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टेक इवॉल्व हो रही है, इतने ज्यादा एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, एआई आ रही है, हर चीज आ रही है. ठीक है, तो खुद को हमें इवॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है. तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी जर्नी से, और खुद को अपडेटेड रखना, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाके पार्टिसिपेट करना, और एंड वन थिंग जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यार द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ. ठीक है, आपने यार इतना अच्छा ड्रीम कंपनी में आपने एक पैकेज लिया, उसके बाद भी वो जो हम्बलनेस है, जो मोडेस्टी है, वो आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट हो रही है. दैट इज रियली अमेजिंग, एंड so good to have you, Saurabh. Thank you so much for being here. Thanks a lot for having me.